So we'll continue with some more cases of distance and displacement. यहाँ से नोटिंग शुरू करते हैं. ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट अ केस. मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है. ओके, और इस स्क्वायर के 4 पॉइंट्स बना देते हैं. ठीक. और ये जो स्क्वायर है इसकी हर साइड 40 मीटर, 40 मीटर्स का एक स्क्वायर है. ठीक है. अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए. ठीक है. moves on the path, या moves on the perimeter, the boundary A to B, B to C, C to D. ठीक है. एंड देन रिटर्न्स बैक टू A. मतलब उसने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया. ही कंप्लीट्स वन राउंड बाय मूविंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है. अब इसमें से मैं केस बाइफरकेट करते जाऊंगा एंड वी विल बी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जिसको अपन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसको नोट करो. इसमें से केसेस बनाते हैं अभी. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए, सबसे पहले फर्स्ट केस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि ए टू बी का केस है. अब ए टू बी मूव करने में डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल कर लिया? 40 मीटर्स. ओके. डिस्प्लेसमेंट मेड इज 40 because it is a straight line distance. Distance and displacement are usually equal. So that's the very first and the basic case. If I travel from A to B, my distance and displacement are supposed to be equal, 40 meters each. Chalo, next. Case 2. Okay, I'll present it over here. Let's take case 2. Now, case 2 is from A to B and then to C. Okay, let's go for it. Again, the same thing. We have to find the distance traveled and the displacement covered. Okay, distance traveled, I guess, is not at all a concern. The total distance traveled from A to C is 80 meter. Done. That's 40 plus 40. Total traveled. Displacement. Displacement is the straight line path between the initial point and the final point. That means I need to find this hypotenuse because it's a square, right angle triangle. Find the hypotenuse.
Pythagoras theorem. Let's find the hypotenuse by Pythagoras theorem. Displacement is AC. So we are interested to find AC now. Where hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So that's 40 square plus 40 square. That's 1600 plus 1600. That is 3200. But that's AC square right now. And we have to take the square root of that number. While taking square root, these two zeros convert to 10. And when they come out of the root, okay, let me just present it with the, we are finding the square root. Okay. तो एक तो 10 आ जाएगा और हम 32 को भी जरा बाइफरकेट कर लेते हैं. 32 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं कि उसमें से कोई पेयर बन रहा है क्या. आर वी गेटिंग एनी पेयर आउट ऑफ इट, वो चेक कर लेते हैं. ओके, तो एक 2 और एक 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा. 10 ऑलरेडी अवेलेबल था, तो 40 बाहर हो गया और अंदर क्या बचा, बस एक √2, और आंसर आ जाएगा काय में, मीटर. 40 √2 मीटर इज आर डिस्प्लेसमेंट. 40 √2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, इट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, डन. अगला केस देख लें अभी. चलो केस नंबर 3. केस नंबर 3 पुट करते हैं और उसके मेजरमेंट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं. नाउ द पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम A to D वाया B and C. तो इसलिए वो एरो बना के दिखाना होगा, वरना A to D डायरेक्ट भी दिख रहा होता है. अब ये ट्रैवल होगा. केस नंबर 3. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेते हैं. केस नंबर 3, डू इट. चलो, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी नाउ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी, सॉरी, 120 मीटर्स. 3 ही तो पाथ कवर किए बनने, डी पे रुके ना बना के. A to D. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कनेक्ट किया था अपन ने, शॉर्टेस्ट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. So that is already available with us, and the displacement is 40 meter. Displacement is 40 meter. Okay, done. और एक लास्ट केस इसमें क्रिएट कर देते हैं, जस्ट टू कवर अप ऑल द पॉसिबिलिटीज. केस नंबर 4, A to A. केस नंबर 4, A to A. Okay, done. Can be worked out very easily. Case number 4, A to A. Now, in this case, the distance traveled is 160, but the displacement is 0. Absolutely fine. Okay. Okay. We have somewhat similar questions in the book too. We'll take it later once we are done with speed. Let's see. So this was in the square format. Now we'll have a case of circle. Okay, let's take the next case. Now, we have a circular track. Okay, and here is the starting point, and the person has 4 checkpoints, total A, B, C, and D. Okay, we have 4 checkpoints. Okay,
ना, ये तो डायमीटर हो गया, है ना। ये भी एक डायमीटर, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, क्वाड्रेंट्स हैं ये, 4 क्वाड्रेंट में अपन उसको बांट दिया। ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट टेक कि इसका रेडियस ना हम 1 मान लेते हैं। लेट्स कंसिडर द रेडियस टू बी 1, आई विल टेक इट टू बी 1 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस इज 1 किलोमीटर। ओके, फाइन। नाउ now we'll be taking multiple cases and we have to find the distance and displacement like the previous one। ठीक है, let's check it out, है ना। तो ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं, केस बनाते हैं और वही अप्लाई करके देखते हैं जो हमने अभी पिछले वाले में किया। सर्कल पे ट्रैवल किए गए 1 राउंड के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हाँ, 2 पाई। ठीक है, उसको यूज करके अभी अपन चलने वाले हैं। और क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, सब जगह अवेलेबल है 90 डिग्री चारों केस में। केस नंबर 1 में अपन चलते हैं A to B। चलिए, एंड लेट्स ट्राई टू कवर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट द पर्सन वुड हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम A to B। A to B जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। इफ वी गो फॉर डिस्टेंस, क्या लगता है कितना सर्कल का पार्ट कवर किया उसने? 1/4। दैट्स इट। 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1/4 ऑफ 2 पाई आर। आर इज 1 राइट नाउ। दैट्स इट। 2 2 4। अभी हम आंसर्स को पाई के फॉर्म में मेंटेन कर लेंगे, तो मेरा आंसर आ गया पाई/2 मीटर्स। इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। 1/4 ऑफ द सर्कल वी ट्रेवल्ड ऑन द सर्कमफेरेंस। तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर से मेरा एक आंसर निकल के आ गया पाई/2 किलोमीटर्स। एंड नाउ we have to deal with the displacement, that is the straight line distance between the 2 points. This one, straight line distance between the 2 points, I have to find AB, and yes, it is a right angle triangle again, so we'll use Pythagoras theorem in order to find the hypotenuse। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट में हमारा एक्सप्रेशन कितने के लिए आ रहा है? द डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय AB, सॉरी ना, not 2। AB square is equal to AO square plus BO square। 1 square, 1 square, that's 2, but it is AB square. We are interested in AB, so that will be square root of 2। So that's our displacement for this case, √2 kilometers। √2 kilometers is a straight line distance between those 2 points। Okay, सर्कुलर पाथ के केसेस वर्कआउट कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने स्क्वायर फील्ड लिया, स्ट्रेट लाइन पाथ लिए हैं, ट्राइंगुलर पाथ्स लिए हैं। तो वी आर कवरिंग ऑल पॉसिबल रेंज जो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे क्रिएट हो सकती है। ओके, मूविंग टू केस नंबर 2। द पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम A to C वाया B। ओके, लेट्स एक्सप्लोर दिस पार्ट नाउ। What would be the distance and the displacement covered while traveling from A to B and then C, finally C? Okay. ठीक, इट्स क्वाइट इजी एंड डायरेक्ट, मतलब है ना, नो फॉर दो ओवर कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड। डिस्टेंस, हाँ मतलब हाफ ऑफ 2 पाई आर ना, सेमी सर्कल बन गया ना, ये सेमी सर्कल क्रिएट हो गया।
तो सेमी सर्कल यानी हाफ ऑफ 2 पाई आर, हाफ ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। दैट टू कैंसिल दिस टू एंड द आंसर इज पाई किलोमीटर्स। ओके, डन। डिस्प्लेसमेंट टू, displacement, the distance between the starting point and the final point, क्या बन गया ये तो? Diameter. This is the diameter itself and it comes out to be 2 kilometers. Okay, 2 kilometer diameter, diameter ही बन गया ना, तो 2 किलोमीटर का उसने अपने को डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डायरेक्टली दे दिया, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, मूविंग टू द थर्ड केस। If the person further executed his distance to point D via B and C, via B and C, ठीक है, okay, let's deal the distance and displacement covered in this case, in this situation. A to B to C and then to finally to D. How much part of the circle we have covered now? 3/4, है ना? 1/4, 1/4 and 1/4. So that's in total is 3/4 of what? 2 पाई आर अगेन। तो भाई ये 2 से 2 काट दिया अपन ने और मुझे डिस्टेंस ट्रेवल मिल गया 3/2 पाई किलोमीटर्स। ओके, डन। 3/4 of the circle has been traveled। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये तो वही वाला हो गया ना, कौन सा वाला केस? फर्स्ट वाला। पाइथागोरस, ये डायरेक्ट, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट हियर, फर्स्ट केस। वही डिस्प्लेसमेंट है, वही ट्राइंगल है, सेम वैल्यूज हैं, सेम मेजरमेंट्स हैं। यस, अगेन द डिस्प्लेसमेंट विल बी √2 किलोमीटर, ठीक है। And the last possibility, returning to the same point after traveling the whole circle, A to A. A to A, not at all a concern. A to A, the travel from A to A. Okay. Traveling from A to A. ठीक है, that's easy going, है ना? Distance traveled is the whole circumference itself. 2 पाई आर. R will be 1. So we got it as 2 pi kilometers. And the displacement in this case is 0 because we are back to the initial point. बढ़िया, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ के केसेस हो गए, एक वो स्क्वायर फील्ड का केस हो गया, ठीक है, फाइन विवान, श्योर, चलो बढ़िया, ठीक है। और वर्कआउट है कुछ करते हैं? ओके देन, चलिए नेक्स्ट केस। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना, अप्लाई करके देखते हैं। प्लानिंग खुद जमानी होगी, अभी तो डायग्राम क्रिएट करके दे दिए थे, इसमें जो भी सिचुएशन में हो रहा होगा उसको पहले वर्कआउट करेंगे, है ना। अ फार्मर मूव्स अलोंग, a farmer moves along the boundary, a farmer moves along the boundary of a square, boundary of a square field, boundary of a square field of side 10 meter
of side 10 meter in 40 seconds. ठीक है. What will be the magnitude? What will be the magnitude? Magnitude means the value है ना, of displacement of farmer, displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position. देखते 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 चीजों को अप्लाई करने से लर्निंग होगी. एप्लीकेशन में घुसना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिकल है सीरियसली. मतलब कोई प्री प्लान, कोई डेफिनेशन, कोई रटा हुआ मैटर थोड़ी चाहिए था. एक व्यक्ति था, उसको चलाना था, चलवाना था. खुद ही चल लो अपन यार. बी इन द सिचुएशन. पूरा फिजिक्स प्रैक्टिकल है यार. लर्निंग में गए ना तो हाथ से निकल जाएगा. है. चलो चेक करते हैं. वाह. ओके, लेट्स वर्क इट आउट. डील द सिचुएशन. सी लिटरली है ना, उसको प्रैक्टिकली डील करने की कोशिश करो. चलो ठीक है, देखते हैं. फार्मर को टोटल मूवमेंट करना था 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक, जिसका टोटल टाइम निकल के आता है कितना? 140 सेकेंड चलवाना है उसको. 140 में से फर्स्ट 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट, ये लिखा है ना. 40 सेकेंड्स में पूरी बाउंड्री कंप्लीट कर लेता है वो. बाउंड्री 40 सेकेंड्स में पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो जाती है. मतलब एक राउंड पूरा हो जाता है. अभी कितना बचा? नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में एक और राउंड कर लिया होगा. एक और 40 सेकेंड्स में एक और राउंड हो गया होगा. कितना टाइम बचा? 20 सेकेंड बचे. तो अगर 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा था, तो आधा राउंड कंप्लीट होगा, हाफ राउंड कंप्लीट होगा. जरा बताना क्या हुआ होगा. फर्स्ट 40 सेकेंड के बाद वो किस पॉइंट पे होगा? ए. वेरी नाइस. नेक्स्ट 40 सेकेंड्स ए. नेक्स्ट 40 सेकेंड्स ए. एंड देन फाइनली सी. तो इसका जो फाइनल पॉइंट है वो सी है. ठीक है, फाइनल पॉइंट सी है. ओके, डन. अब ये 3.5 राउंड्स में उसने टोटल कितना ट्रेवल? 3.5 राउंड हो गया ना ये. 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड. ओके. हाँ, तो 40 मीटर हमारे फर्स्ट में ट्रेवल हो गए. अगले 40 मीटर और ट्रेवल हो गए. 40 मीटर्स अगेन ट्रेवल हुए. एंड देन वी ट्रेवल्ड 20 मीटर्स. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 140 मीटर्स. बात आई डिस्प्लेसमेंट की. हमने डिस्प्लेसमेंट में बात करी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन. ये हो गया. सिंस इट इज अ स्क्वायर, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ वी हैव टू पुट द पाइथागोरस थ्योरम. अब यार, पाइथागोरस थ्योरम यू हैव बीन एग्जीक्यूटिंग फॉर पास्ट 2 years. तो उसमें चैलेंज नहीं क्रिएट होना चाहिए था. आओ देख लेते हैं. आई हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट विच इज ए सी. आई हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट विच इज ए सी. ठीक है. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. 10 square plus 10 square. How much that would be now? So that's 100 plus 100 gives you 200. AC square is 200.
So what's AC? 10√2 मीटर. 10√2. हाउ इट कुड बी 40? चलो देखते हैं. ये जो 200 है ना, ये 100 का रूट तो सीधे क्या आ जाता है? तो 2 ही तो बचा. डन. दैट्स इट. स्क्वायर रूट निकालते समय जीरोस को पहले ही बंद कर दिया, क्लोज कर लिया करो कि हर दो जीरो मिला के एक नंबर बाहर, हर दो जीरो से एक 10 बाहर. इतना बड़ा नंबर फैक्टराइज नहीं करने बैठूंगा मैं वो 8th क्लास का वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए. टाइम वेस्ट होगा. जीरोस को अलग करो, जो नंबर बचेगा उसको रूट में डालेंगे. ठीक है. ओके. दिस वाज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन. 3 जीरो होते, वो भी दिखा देते हैं. अगर मान लो हमारा AC² 2000 आ जाता, राइट, स्टिल ये दो जीरो से तो एक 10 बाहर आता, अंदर क्या बचता? 20 बचता. पर अभी 20 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कुछ पार्ट्स बन सकते हैं. तो हम 20 को फैक्टराइज करके पेयर देखेंगे बन रहा है क्या. 2 10s, 2 5s, 5 1s. एक पेयर बाहर आया, जो पेयर बनता है वो रूट के बाहर हो जाता है. तो 2 बाहर हो गया, बाहर वाले 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया, और रूट के अंदर कौन बच गया? 5. ठीक है. दिस इज हाउ इट इज डन. ओके. So that was an NCERT question that we worked out now, just now. Okay. एक बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की पूरी रेंज कवर हो जाएगी. वो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. बिल्कुल उसी तरह का है जैसा भी अपन ने फार्मर वाला किया था ना, एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चन. लेट्स टेक इट. तो वो टॉपिक और टॉपिक के साथ उसके पॉसिबल क्वेश्चंस को अपन नोट पे बैंक रेडी हो गया पूरा, है ना, मटेरियल. ओके. एन एथलीट an athlete completes one round of a circular track. इसीलिए मैंने आपको केसेस पहले ही करवा दिए थे कि या तो स्क्वायर फील्ड आती है या सर्कुलर ट्रैक आता है, तो अपन ने इसलिए वो केसेस पे बात करी. ऑफ डायामीटर 200 मीटर in 40 seconds. Okay. What will be the distance traveled and displacement at the end of, you'll find it familiar. It's the same timing that we just did the previous one, 2 minutes, 20 seconds. Okay. Draw the figure. Understand the time situation where the person is finally standing. Circular path. Go for it. Okay. So we have a circular track. The person started from here. Let's mark it point A. Again, we have the same timings, 140 seconds. That means we'll have 3.5 rounds. है ना? 40, one round complete, another round complete, another round complete, and half round. So one round full, second full, third round full, and fourth round half. The person would be somewhere here, exactly opposite to the point A. Half circle, half circle. ठीक है. So the person has traveled 3.5 rounds. 3.5 rounds. तो अगर हम पहले डिस्टेंस वर्कआउट करें तो एक राउंड में कितना ट्रेवल होना था? 2 पाई आर. 2 पाई आर. एक राउंड में ट्रैवल कितना होना था? 2 पाई आर. 200 इज द डायमीटर.
200 इज द डायामीटर, ठीक है। सो दैट बिकम्स 200 पाई। ये मेरा आंसर मीटर में आ गया एक राउंड का। बट आई हैव ट्रेवल्ड हाउ मेनी राउंड्स? 3.5 राउंड्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 इंटू टू होता है 7, ठीक है। 3.5 इंटू टू 7 होता है 700 पाई। और पाई का वो वाला वैल्यू बड़ा काम कर जाएगा यहाँ पे। कौन सा? 22/7। 22/7, तो ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया। एंड द फाइनल आंसर केम आउट टू बी 2200 मीटर। इतना उसने 3.5 राउंड्स में ट्रैवल कर लिया होगा। इतना उसने 3.5 राउंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे खड़े हैं, यानी डायामीटर पे खड़े हैं। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज सपोज टू बी 200 meters. Okay. Is that absolutely fine? We have worked out the whole possible range of questions that would arise on the topic distance and displacement. Okay. Just revise it thoroughly. You will get some very short assignments on the app. है ना? So do practice them, do attempt those questions on the app itself. Okay. Fine.